एई वीडियो रे आमे डिस्कस करबा गोटे सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन को केमते एक्सप्रेस करा हुए। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करबा पई डिफरेंट टाइप रो यूनिट्स रहिछि। द फर्स्ट यूनिट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मास परसेंटेज, जोटा को परसेंट W/W एमते सिंबल देके लिखा। तो यार डेफिनेशन कोन, मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ नॉर्मल जमती आम परसेंटेज कैलकुलेशन करुचे से भाया ही करा जाउची। तो यार बेसिकली मीनिंग होची तुम जदि 100 ग्राम सॉल्यूशन नब ताहले सेथरे केते ग्राम सॉल्यूट कि गोटे कंपोनेंट केते ग्राम अच्छी। टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन रे व्हाटएवर मास ऑफ कंपोनेंट इज प्रेजेंट ताकू आमे तार मास परसेंट बोली कहबा। फॉर एग्जांपल तुम जदि कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन देखुच, इट कंटेन्स 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड in water. तो ए स्टेटमेंट रो अर्थ कोन? दिस मीन्स वी हैव 3.62 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड रो सिंबल की फार्मूला होची NaOCl। तो वी हैव 3.62 ग्राम ऑफ NaOCl in 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो एटा को हमें कहि परिबा दैट वी हैव 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। कि तमे ताको सिंबॉलिकली लिखिले यू कैन से दिस इज 3.62 परसेंटेज W/W। तो ए भले आमे ताको एक्सप्रेस कर परिबा। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ परसेंटेज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। ताको हमें लिखिबा V/V। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो जेमति तमे मास रे परसेंटेज कैलकुलेशन करूछ से भाया वॉल्यूम रे भी परसेंटेज कैलकुलेशन करी हबो। फॉर एग्जांपल वी हैव अ 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो यार माने कोन? इफ यू हैव 100 ml ऑफ सॉल्यूशन देन इट कंटेन्स 10 ml इथेनॉल और बाकी जो 90 ml अच्छी सेटा अच्छी वाटर। तो इफ यू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 90 ml वाटर विथ 10 ml इथेनॉल ताले तमे गोटे 100 ml सॉल्यूशन पाइबो। सेथरे इथेनॉल रो वॉल्यूम परसेंट हे गला 10%। सेमती 35% V/V सॉल्यूशन माने जार वॉल्यूम परसेंटेज 35 अछि से भलिया सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। सॉल्यूशंस कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। तमन जदि हमें नॉर्मली दीटा लिक्विड को मिसै की सॉल्यूशन बनेले जेमती वाटर गोटे लिक्विड इथेनॉल गोटे लिक्विड, तो तार मिक्सचर रो जो सॉल्यूशन पाउच तार कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करबा पई हमें कॉमनली ए यूनिट टा यूज करि परिबा। नाउ द नेक्स्ट यूनिट दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ताको लिखंती W/V, परसेंटेज W/V। तो यार माने कोन देखो, परसेंटेज W/V ऑफ अ कंपोनेंट इज मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम divided by total volume of the solution in ml into 100। तो पूर्वर जो दीटा परसेंटेज विषय में कथा हेले जेतेबेले मास परसेंटेज कैलकुलेट करूछ आमे सेठी मास बाय मास करूचे, तो मास रो यूनिट टा कैंसिल हो जाउछ। कि वॉल्यूम परसेंटेज रे तमे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करूछ तो सेठी वॉल्यूम रो यूनिट भी कैंसिल हो जाउछ। तेनो सेठी हमें यूनिट कोन भी नै परिबा। बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस परसेंटेज W/V एठी हमें मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन गोटे करूचे। तेनो एठी तमरो इंपोर्टेंट होची मास टा को यूनिट रे रहिबो आ वॉल्यूम टा को यूनिट रे रहिबो, ताकू बाय डेफिनेशन फिक्स करा हिची। तो यू कैन नॉट चेंज दिस। सो मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml into 100 gives you the percentage W/V of a solution। तो तुम कहि पारो इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of the solution। तार मीनिंग से या mass of the solute in gram which is dissolved in 100 ml solution। For example we have a 10% W/V aqueous NaOH। तो यार माने कोन? यार अर्थ होची तमे जदि 100 ml of solution नबो then it will have 10 gram NaOH present in it। तो जेतु 100 ml solution रे 10 ग्राम अछि आमे ताको लिखिबा 10% W/V। Now the next unit that we are going to talk about is called parts per million और ताको abbreviate करके लिखंती ppm, parts per million।
मिलियन माने होची 10 to the power 6. तो parts per million or ppm is defined as mass of the component divided by total mass of the solution into 10 to the power 6. तो जस्ट लाइक तुम जमी परसेंटेज कैलकुलेट कला बेलू एटी 100 मल्टीप्लाई करुच पीपीएम कैलकुलेशन बेले सेम जिनस हम किंतु मल्टीप्लिकेशन हम 10 to the power 6. तो mass of the component by total mass of the solution into 10 to the power 6 gives you ppm. For example, 1 liter of sea water जार की mass टा roughly 1030 gram, it contains about 6 into 10 to the power minus 3 gram of dissolved oxygen. तो आम जब ये dissolved oxygen रो ppm calculate करिबा, then the ppm would be mass of dissolved oxygen which is 6 into 10 to the power minus 3 gram divided by total mass of the solution which is 1030 gram into 10 to the power 6. तो यही नंबर को हिसाब कले तमे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रो ppm इन सी वाटर कैलकुलेट कर दे परिबो. तो नॉर्मली जेतेबेले गोटे सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, तो ताकू नॉर्मल परसेंटेज यूनिट रे लिखिले गोटे बहुत छोटो नंबर की गोटे छोटो फ्रैक्शन आसुची, सेही सब केस रे हमें ppm टाको प्रिफर करबा. जेमती प्रैक्टिकली स्पीकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर एगुड़ा को नॉर्मली हमें ppm यूनिट रे एक्सप्रेस करूचे. तापाई दी प्रकार यूनिट लगांती, गोटे होची ppm और समटाइम्स इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम पर ml. तो जोटी कंसंट्रेशंस आर वेरी लो सही जगह रे ppm टाइप रो यूनिट को हमें प्रिफर करबा. नाउ द नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन पई हमें x सिंबल को यूज करबा. तो मोल फ्रैक्शन कोन? इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total mole of all components in the solution. तो गोटे सॉल्यूशन तुम जो बनईच से धर ए बी सी डिफरेंट टाइप रो जिनस को मिसेकी रखिच, तो ता भितर जदि ए रो सपोज मोल फ्रैक्शन दरकार, देन यू हैव टू टेक मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स माने मोल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, टोटल मोल समस्त मिसेकी नब. तो दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. तो सपोज हम गोटे बाइनरी मिक्सचर नहीं, बाइनरी मिक्सचर माने अ मिक्सचर व्हिच कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स. तो सेथरे धर गोटे कंपोनेंट रो मोल अछि n1 आ गोटे कंपोनेंट रो मोल अछि n2. ताले हम कहि परिबा फर्स्ट कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन x1 विल बी इक्वल टू मोल ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मोल. टोटल मोल को हम लिख परिबा n1 plus n2. तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट और डिफाइन मोल फ्रैक्शन. Similarly, you can define a mole fraction for the second component also. So x2 will be equal to mole of that component by total moles n1 plus n2. So this is how we can calculate mole fraction in a binary mixture. But if the number of components is more than 2, for example, got a solution achi which contains I number of components. तो सेठी तमरा मोल गुडा का धर एभलिया अछि n1 n2 n3 एभलिया अप टू ni. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स रे हम अलग अलग मोल लिखिचे. तो एठी जदि गोटे कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन सपोज ith कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन को आमे लिखिबा xi, ताको कैलकुलेट करिवार अछि, देन इट इज इक्वल टू मोल ऑफ दैट कंपोनेंट ni डिवाइडेड बाय टोटल मोल. तो टोटल मोल को तमे n1 plus n2 plus n3 एमती जाई जाई प्लस ni पर्यंत ऐड करि पारो, और तमे ताको सिंपली एमती लिखि पारो इट इज समेशन ऑफ ni. तो समेशन ऑफ ni मीन्स n1 रो नेकी ni पर्यंत सबु मोल रो सम. तो दिस इज हाउ मोल फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर एनी कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. तो ये गोटे इंपोर्टेंट रिजल्ट तमे मने रखिबो, इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो जदि गोटे सॉल्यूशन रे जेतरा भी कंपोनेंट थाउ समस्तंकर मोल फ्रैक्शन को तमे ऐड कर दबो, then the total sum should be equal to 1. तमाने गोटे सॉल्यूशन कंटेनिंग I number of components, सेठी हमें फर्स्ट कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन को x1 लिख परिबा, सेकंड को x2 लिखि परिबा. तो सेमती अप टू ith कंपोनेंट xi हमें नहीं परिबा. तो देयर x1 plus x2 plus x3 plus x4 एमती यदि सबु कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन को ऐड करिवो, द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो गोटे बाइनरी सॉल्यूशन रे सिंस देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स x1 और x2 दीटा ही मोल फ्रैक्शन तुम पाउच, तो बाइनरी सॉल्यूशन रे मु कहि परिबी x1 plus x2 is always equal to 1.
तो ये जो रिजल्ट आम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करवा या भल भाव मन रख तो लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ अ मोल फ्रैक्शन विथ अ पर्टिकुलर एग्जांपल तो ये क्वेश्चन देछि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल having formula C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass तो एटी तुम सॉल्वेंट रही वाटर ओके तो सॉल्वेंट जदि किसी देनी डिफॉल्ट सॉल्वेंट तुम वाटर बोली कंसीडर करिवो तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर तार कंसंट्रेशन देछि 20% C2H6O2 by mass तो यही जो स्टेटमेंटा देला 20% C2H6O2 by mass तार अर्थ कौन इट मीन्स इफ यू टेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन देन इट कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 और बाकी जो 80 ग्राम रहिला दैट 80 ग्राम इज वाटर तो नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट हमको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रो मोल्स बाहर करबा को पड़िबो तो 20 ग्राम C2H6O2 will be equal to 20 divided by the molecular mass or molar mass of C2H6O2 सेटा तार मोल को रिप्रेजेंट करिवो तो C2H6O2 रो मोलार मास केते C2 हला 24 प्लस 6 टा हाइड्रोजन 6 तो 24 प्लस 6 हला 30 प्लस ऑक्सीजन दीटा अछि 32 तो 30 प्लस 32 हला 62 ताले 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 is 20 by 62 moles सेम दी 80 ग्राम H2O वाटर फॉर्मूला होची H2O तो 80 ग्राम H2O would be equal to 80 by 18 moles so now that we know moles of each component हमको दरकार mole fraction of ethylene glycol so now we want to calculate X of C2H6O2 so that will be equal to mole of ethylene glycol which is 20 by 62 divided by total mole होगा 20 by 62 plus 80 by 18 तो this is equal to 0.067 तो यही टाइप रो कैलकुलेशन हमें बहुत इजीली कर दे परिबा सेमती द नेक्स्ट यूनिट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मोलारिटी तो मोलारिटी को हमें नॉर्मली कैपिटल M सिंबल देके लिखिबा नाउ मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोल ऑफ अ सॉल्यूट divided by volume of the solution in liter तो एठी अगेन वॉल्यूम टाको हमें फिक्स्ड लीटर यूनिट रे ही नबार अछि सो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिफाइन्स मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ 0.25 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन ताको तमे लिखिबो 0.25 m वेयर m इज कैपिटल तो एमती जदि लिखा जायछि ताल तमे जानिबो NaOH सॉल्यूशन रो मोलारिटी होची 0.25 सो व्हाट दैट मींस तमे जदि गोटे लीटर सॉल्यूशन नउच द सॉल्यूशन विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ द सॉल्यूट तो ये केस रे हमर सॉल्यूट होची NaOH तो इफ दिस काइंड ऑफ अ कंपोजिशन इज क्रिएटेड तार मोलारिटी को हम लिखिबा 0.25 और 0.25 m So now let us explore this molarity a little bit in more detail through an example. Calculate molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. तो हमको जदि NaOH solution रो molarity दरकार तो molarity पे हमको दीटा जिनस दरकार we need mole of NaOH and we need volume of the solution in liter. तो एबे हमको कौन इन्फॉर्मेशन देछि वी नो वी हैव 5 ग्राम NaOH रो मोलार मास होछि 40 ताले 5 ग्राम ऑफ NaOH को हम लिखि परिबा 5 डिवाइडेड बाय 40 मोल ऑफ NaOH तो मोल ऑफ NaOH दरकार सेटा हमें पाई गले सेमती एठी सॉल्यूशन रो वॉल्यूम हमको देछि 450 ml तो 450 ml को जदि लीटर को कन्वर्ट करिवो दिस इज 0.45 लीटर ताले मोलारिटी पाई जहाँ जहाँ दरकार सेगुड़ाक आम प्रथमे कैलकुलेट करदे तो नाउ वी कैन पुट इन ऑल दीज वैल्यूज तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल नाउ बी इक्वल टू 5 by 40 डिवाइडेड बाय 0.45 तो यहाँ कैलकुलेट है कि जहाँ आसीबो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मोलारिटी तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ मोलारिटी विल बी 0.277
ताले एठी आमे जो सॉल्यूशन पाइले तार मोलारिटी हला 0.277 और तमे ताको लिखि पारो 0.277 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो ए सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन को ए भलिया आमे लिख परिबा। ना मोलारिटी भली आउ गोटे इंपोर्टेंट यूनिट अछि कॉल्ड मोलालिटी। टिके स्पेलिंग टा अलगा भलो भाबरे मार्क करो। या पई सिंबल आमे नबा स्मॉल m। तो कैपिटल M represents molarity, small m represents molality. So what is this molality or small m? This is equal to moles of solute divided by mass of the solvent in kg. तो तमे डिनोमिनेटर रे जो जिनसटा नउछो ताकू प्रॉपर्ली मने रखिबो। इट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट नॉट द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ता तमे नबो केजी रे और न्यूमरेटर रे रहइबो मोल ऑफ सॉल्यूट। So if you do this calculation, then you get molality of a solution. So for example, we have 1 mole per kg or 1 small m solution of KCl. तो तामाने एठी हमें गोटे KCl solution नैचे जहारो molality होची 1. तो molality 1 means we have 1 mole KCl added with or mixed with 1 kg of solvent. तो एक केस रे हमारा solvent होची H2O. So if you mix 1 kg water with 1 mole KCl to form a solution, then say solution रे KCl रो molality हबो 1. ताको तमे लिखिबो 1 m. M is small m. So this is what molality means. So now let us see an example on molality. तो एटा गोटे क्वेश्चन देछि calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid CH3COOH in 75 gram of benzene. तो ये जो स्टेटमेंट को देखिले जना पड़छि एठी इथानोइक एसिड हला हमर सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहिछि हमर बेंजीन। सो हियर इफ यू वांट टू फाइंड मोलालिटी और स्मॉल m फॉर इथानोइक एसिड तार फार्मूला हबो इट इज मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन इन केजी। बेंजीन रो फार्मूला होछि C6H6। ताले बे क्वेश्चन रे जो इंफॉर्मेशन अछि सेहि थ्रू कैन बी फाइंड मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड। Now moles of ethanoic acid will be equal to mass given 2.5 gram divided by ethanoic acid रो molar mass. तो CH3COOH रो molar mass होची 60. ताले moles of CH3COOH is mass in gram by molar mass 2.5 by 60. समती mass of C6H6 in kg तो हमको देछि 75 gram benzene. तो mass of C6H6 which is given equal to 75 gram ताकू हमें kg को convert कले it will be 75 divided by 1000 kg. So now that we have moles of CH3COOH and mass of C6H6 in kg, we can put them here to find out molality of the solution. So molality of the solution will be equal to 2.5 by 60 divided by 75 by 1000. तो याको simplify कले this will be equal to 2.5 divided by 60 into 1000 by 75 which is equal to 0.55. ताले एठी हमें कहि परिबा ए जो सॉल्यूशन नैचे सेथरे मोलालिटी ऑफ CH3COOH is 0.55 और तमे ताको एमते लिखि पारो 0.55 small m solution of CH3COOH. So these are the various concentration units that we are going to use to express concentration of different solutions in this chapter. तो ये सब तक यूनिट रो डेफिनेशंस प्रॉपर्ली मन रखिबो आ ईच को नेकी जो सिंपल बेसिक कैलकुलेशन होची सेगुडा केमते होची ताके भलसे